In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum class. And today we have a discussion about chapter 6 part 2. Few of the patterns we have already discussed in previous part, and now this is the second session. Comsas University Islamabad, and we belong to Lahore campus. Today we are starting chapter using design patterns, and I am Sana Makbul, your course leader. Here is some basic information. Bachelor's of Science in Software Engineering, Object-Oriented Software Engineering, your course title, course code CSE 304, and your book Object-Oriented Software Engineering Practical Software Development using UML and Java. Now, second part, few of the patterns we have already discussed and few of them are here in this part using design patterns. एक्चुअली आपको जब हम ये सारे डिज़ाइन पैटर्न समझ लेंगे और पढ़ लेंगे तो बेसिक पर्पस क्या है आपको इस चैप्टर को पढ़ने का कि जो कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हर पैटर्न का वो कॉन्टेक्स्ट जो है कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले हमें सोचना होता है. जिस तरह आप लोगों के प्रोजेक्ट हम लोग डिसाइड कर रहे थे, मैं आप लोगों से आपके प्रोजेक्ट की स्टोरी सुनती थी कि ये वाला आप इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैं आपका वो एक किस्म का कॉन्टेक्स्ट सुन के ये आइडिया लगाती थी कि वाकई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है या जस्ट अ सिंपल प्रोजेक्ट, जस्ट अ सिंपल वेबसाइट, राइट. इसी तरह जो है आप लोगों ने भी खुद भी सोचना है कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन सा पैटर्न कहाँ लाए कर रहा है और किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है तो ये वाला पैटर्न सूटेबल होगा या नहीं होगा, राइट. बहुत सारे ऐसे भी हैं प्रोजेक्ट्स या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जिनको सर्च करें तो उनके जनरल सोल्यूशन आपको नेट पे मिल जाते हैं आसानी से और आप लोग वो यूज़ कर लेते हैं. लेकिन लेट के अगर आपको नहीं मिलता और आपने खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और कॉन्टेक्स्ट सुनना है, उसके बाद और लेट के आपके सामने एक प्रोजेक्ट आया है, आपने उससे डिटेल में फॉलो करना है, रीड करना है, रिसर्च करनी है और सोचना है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी और आपने डिज़ाइन बनाना है, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट और जो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा, जिस जो पैटर्न सबसे ज़्यादा बेस्ट रिलेटेड होगा वो आपने यूज़ करना है. ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट एंड द फोर्सेस बिहाइंड ईच डिज़ाइन पैटर्न. Singleton pattern. First thing we need to understand is कि सिंगलटन क्लास क्या होती है. सिंगलटन क्लास या सिंगलटन हम किसे कहते हैं? असल में ऐसी क्लास जिसका एक ही इंस्टेंस बन सके, उसके बाद उसका कोई इंस्टेंस ना बने, उसे सिंगलटन क्लास कहते होते हैं, राइट. और ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम जो हैं ऐसी क्लासेस चाहें या ऐसे क्लासेस वांट करें जिसमें ओनली वन इंस्टेंस एग्जिस्ट करे, राइट. जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी की क्लास है, राइट. कंपनी और या कोई एक यूनिवर्सिटी की क्लास है, वो तो एक ही कंपनी है ना, जैसे ऐसा बिजनेस रन कर रही है और उसकी फिर फर्दर इंस्टेंसेस नहीं होने चाहिए क्योंकि वो खुद रियल लाइफ में वो एक ही एग्जिस्ट करती है. तो जब उसकी क्लास रन हो तो एक ही इंस्टेंस बने, ना ज़्यादा ना बने, राइट. जो एक ही कंपनी होती है या एक ही बिजनेस का एक ही टाइटल नेम होता है तो उसके मोर देन वन इंस्टेंसेस हम नहीं बना सकते, ये रिस्ट्रिक्शन डालनी होती है. इसी तरह लेट फॉर एग्जांपल जिस तरह मेन विंडो की क्लास हम बनाते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, राइट. हाँ, और उसमें भी हम चाहते हैं कि एक मेन विंडो एक ही ओपन हो, इससे ज़्यादा ना हो, राइट. तो उसका भी हम चाहते हैं कि एक ही इंस्टेंस बने, मोर देन वन इंस्टेंस वो ना बने और ना ही कोई और क्लास उसका मोर देन वन इंस्टेंस बना सके, राइट. तो ये इंश्योर करना कि मोर देन वन इंस्टेंस क्रिएट हो ना, पॉसिबल ना हो ये, और ये सिंगलटन क्लास बने, दिस इज a problem, right. And we need to face this problem and we need to solve it. और क्या इश्यूज हैं लेट के क्या एक हम लेट फॉर एग्जांपल के हम कहते हैं कि एक हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, वो तो उसका तो कोई इंश्योरिटी नहीं होती ना कि वो एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट. वो तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर है,
और उसके थ्रू जो है मोर देन वन इंस्टेंसेस भी बन सकते हैं, कोई और क्लास भी बना सकती है, और जब भी उसे कॉल करेंगे विद इन अ क्लास भी बन सकता है। तो एक तो ये हो कि कोई या तो इंस्टेंस बने और वो सिर्फ ऐसा इंस्टेंस बने जो सारी की सारी क्लासेस उसे एक्सेस कर सकें, जिस तरह ग्लोबल इंस्टेंस होता है, और जब भी उन्हें ज़रूरत हो एक पब्लिक सा इंस्टेंस बने, फिर तो चलो और मज़ीद नहीं बनेंगे, राइट। और इसके अलावा मज़ीद कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है, लेट के कोई पब्लिक क्लास जो है उसमें एक पब्लिक, बल्कि हम एक प्राइवेट क्लास बना वेरिएबल बना लें और उसे सिंगल इंस्टेंस के तौर पे सेव कर लें, राइट, फिर वही यूज़ होता रहे। या पब्लिक मेथड में क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड बनाएं जो एक इंस्टेंस कॉल करे, जब वो एक दफ़ा कॉल हो जाए तो उसको एक दफ़ा किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लें और हर दफ़ा वही यूज़ हो, और वो जब भी जो है वो इंस्टेंस कॉल हो या कोई इंस्टेंस बनाएं तो वही इंस्टेंस जो है वो हर दफ़ा कॉल हो एक फंक्शन के थ्रू, राइट, फर्दर इंस्टेंसेस उस क्लास के ना बने। या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना लें और इंश्योर कर लें कि कोई और क्लास जो है वो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर ना बना सके, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और एनी अदर सॉल्यूशन इफ यू हैव इन योर माइंड यू कैन सेट इन अ डिस्कशन सेशन, राइट। और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी इंश्योर कर सकता है, पब्लिक क्लास बनाएं जिसमें जो है हम एक इंस्टेंस बना लें जो एक दफ़ा क्रिएट हो जाए तो उसे स्टोर कर लें, और जब जितनी बार भी कोई इंस्टेंस कॉल हो तो वही हर दफ़ा कॉल हो। या हम एक कि ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस तरह के, राइट। और इसके अलावा जैसे हमने कंपनी की अभी एग्जांपल डिस्कस की, हमने एक मेन विंडो ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की यूज़ की। आप लोगों के माइंड में जो सिंगलटन क्लासेस की एग्जांपल्स हैं या इवन इन योर ओन प्रोजेक्ट जो आप करेंटली कर रहे हैं उनमें जो है वो आपने मुझे बतानी है, राइट। अच्छा, ये सिंगलटन क्लासेस होती हैं। हम इसकी सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि कैसा होता है। सॉल्यूशन इज के लेट सिंगलटन क्लास क्या होती है, उसमें एक इंस्टेंस बनता है और उसी का ही फंक्शन बनता है कि वो स्टोर कर लिया जाता है और एक फंक्शन के थ्रू से बार बार कॉल कर लेते हैं, चाहे दूसरी क्लास को भी चाहिए हो, ठीक है। लेट के फॉर एग्जांपल एक कंपनी का क्लास है जिसका एक इंस्टेंस बन सकता है, राइट। Now the next patron is observer patron. For this, firstly we will discuss one concept in which you may remember that we have discussed about coupling and cohesion concept, right? Coupling is communication between objects, but communication between classes, right? Or the more the communication between objects in any section of a project, the more the project is coupled, the more the project is complex, right? And if there is so much coupling in project, then if we change in one section it will affect the other, and if we simulate one section then other section is also ready in a memory for with it, and it will also affected change and also consume memory with it. So it means it also gets more processing power. The project is becoming more and more complex as the project is more coupled, right? In the same way, there are so much chances in our projects when we implement that when we create two-way association between two classes, two-way association, and the code for the classes becomes inseparable, right? And when you compile one, the other one also be available, and since the first one explicitly refers to it, right? Which means if you use or reuse one of the class, then also reuse the other one too. You can't separate it, you can't make it an independent section of it. It's to change it, changes in such type of code is very difficult, right? And to reduce the connection
interconnection, which is a problem, biggest problem in it, between classes, especially between classes that belongs to different modules or subsystems. In other words, the problem is how we can ensure that the objects communicate with other objects without knowing which class they belong to, right? This is the thing. This is the most worst condition in a project. When we affect one object or one class, it affects the others one too, right? Mm, the most favorable situation is you need to make a design very flexible. The more the maximum and the more the system is flexible, the more the extent it can be changed, and it is more cohesive and less coupled, right? So the solution for this problem is the observer pattern, in which you create an observable class, abstract class, which can be named as observable, or which is considered as observable, and it is the simplest class, having a mechanism to add and remove the observer, and any application class will get inherited with that class, or declare itself a subclass of that observable class, right? This can be the solution for such situation in which you need to associate more than one classes, right? Like in this slide, you are showing that there's an observable class and another concrete class is get inherited with it, right? Like observable class is inherited with forecaster, weather viewer, and we each with is connected with an observable class, though two classes are not connected with each other directly and not coupled concretely with each other, right? You know that what is anti-patron? Anti-patron is another solution which can be valid or invalid in such situation. आप लोगों ने अब मुझे बताना है इसका एंटी पैटर्न क्या हो सकता है, कोई भी ऑब्जर्वर पैटर्न के साथ, कि कौन सा और कोई सोल्यूशन हो सकता है जो आप इसके अगेंस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन है ना, क्लासेस तो कम्युनिकेट लेस करें एक दूसरे से, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि एंटी पैटर्न क्या हो सकता है और हाउ इट कैन बी वैलिड और इट कैन बी फेवरेबल फॉर एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके आपने मुझे बतानी है इन a discussion session. Now another patron, delegation patron. What is delegation? First of all, you need to think. Delegation is need to give your own thing to another if another also want this, right? Delegate your anything, give your anything to other who requires it. So, such situation also exists when you need an operation in a class and you realize that another class is also needed it and also be want its implementation. Maybe that any एक मेथड आपने एक क्लास में बनाया, आपको पता चल रहा है दूसरी क्लास में भी ये दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा, तो बजाय कि हम उस क्लास को इनहेरिट कर दें उसके साथ और जो है उसमें उनका इज़ा का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब उनकी कोई कैटेगरी ना बनती हो, हायरार्की ना बनती हो, फिर भी हम उसे उस ऑपरेशन के लिए इनहेरिट कर दें, या एक जो क्लास है जिसमें वो ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है उसके पास और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे, आप सारे के सारे फंक्शन दूसरे क्लास के लिए एक्सेसिबल ना बनाना चाहते हो, तो फिर हम क्या करें इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करें, राइट? और मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ मेथड दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अदर क्लास, तो हम ये सबसे बड़ा इशू है कि हम इस तरह के इशूज को कैसे हैंडल करें, राइट? और सबसे बड़ी बात कि हमने मिनिमाइज करनी होती है डेवलपमेंट कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी बाय रीयूजिंग आवर मेथड्स। ठीक है, उसके लिए हम ज़रूरी नहीं है कि इनहेरिट कर दें, और हमने लिंकेजेस बिटवीन क्लासेस भी हमने सबसे मिनिमम बनाने होते हैं, इसलिए भी हम इनहेरिट नहीं करते कि एक इफेक्ट होगी तो दूसरी के लिए भी एक्सेसिबिलिटी और इश्यूज बढ़ जाएंगे। So the appropriate way can be the delegation pattern for it, in which one class is a delegator and a second one is a delegate, and
what arrow is also showing that which class is delegating its functions, right? And one thing is uh, delegator gives it. So create a method in the delegator class that does only one thing. It calls a method in a neighboring class, right? Thus allowing reusing of the method for which the delegate has responsibility. So neighboring means uh, class can delegate to an associated any other class. Okay, and also can be associated with a simple link with another class from which it is getting the another getting a method which is going to be delegate. Here is an example in slide that is about stack and linked list. Stack and linked list. Stack class can be easily created from an existing collection class like linked list, right? And push method of stack would simply call add first method of linked list, and pop method will call the remove first method, and is empty method where that would be delegated and with the same name. Right? Now another example of booking specific flight and regular flight. And for this, you are also saying that all have the same name of method, which is delegated with one class to another, right? There's no need to implement separately in each other class, right? They can be delegated from one class to another to which it can be associated. What can be the anti-pattern of delegation? That is overuse of generalization, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमें excessively categories और inheritance और hierarchies नहीं बनानी चाहिए, ज़्यादा ओवर लिंक्ड नहीं करना चाहिए क्लासेस को ताकि हमारी कपलिंग जो है मिनिमम से मिनिमम हो. री यूज ऑफ जनरलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस मस्ट नॉट बी यूज्ड. Just single method है delegated के through, nothing doing this calling that method from one another class is the simplest way to deal with it and accessing its neighboring class. Now another pattern is the adapter pattern. Adapter means which can adapt something else. The something else can be an object and can be a class, right? Here we are discussing the class, right? Actually there's something like जब हम inheritance कर देते हैं एक hierarchy बनी हुई होती है फिर हम एक और incorporate करे होते हैं existing class एक और ठीक है और उसमें जो है वो already एक hierarchy में भी बनी हुई होती है वो खुद भी हो सकता है existing hierarchy में मौजूद हो और हम उसे reuse करना चाह रहे होते हैं. एक तो हमने पिछले पैटर्न में देखा कि हम ना method reuse करना चाह रहे थे but now the thing is class need to be reused, right? In that context हम polymorphism को भी reuse कर सकते हैं जिसमें हमारे पास same name functions हों but signatures are different and but they are from other hierarchy. तो ये भी हो सकता है ये सारे इशू है कि हम पावर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज़ करें हम एग्जिस्टिंग क्लास को कैसे यूज़ करें इन द ऑलरेडी डेवलप्ड हायरार्की में, राइट? और हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी नहीं अप्लाई करना चाहते, राइट? क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस से कपलिंग और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी और जस्ट हमने एक क्लास रीयूज करनी है उसके लिए हम एक और हायरार्की या मल्टीपल इनहेरिटेंस बना दें. दिस इज नॉट राइट एंड फॉर दिस इज द सॉल्यूशन इज अनदर इज अडेप्टर पैटर्न, राइट? अडेप्टर पैटर्न जो है that adapt another class, right? That adapt it for other classes, right? Here is an example, but rather than directly incorporating the reuse class into your inheritance hierarchy, you need to use an class called adapter, and as shown in figure 2,
right? And the association to the reuse class, which is also called this class is also called as adaptee, right? And this figure, like there is a superior class like 3D shape, right? And the other one are subordinate classes like sphere and torus. And one more class we need to reuse with this inheritance hierarchy is Tim's torus, right? And we Tim's torus is using the existing adapting class method that is called calculation volume, right? The delegate method by the adapter may or may not have the same name, but we can use the delegating polymorphic method for this, right? In this way, we does not inherit or does not use multiple inheritance for the class and does not break the existing hierarchy of the classes, but reuse that class as an adaptee and connected a simple associate with it, like in this diagram. And also does not involve in that hierarchy but also associated as an adaptee with this hierarchy, right? Now the next is package pattern. Package pattern is like a package, right? जैसे हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं और डेवलपर्स को सारे पैकेजेस जो है वो एनालाइज करना इज एन इशू, राइट? और फिर उसके अंदर से पैकेजेस में एनालाइज करके अंडरस्टैंड करके उसकी डिफरेंट क्लासेस और फंक्शंस को रीयूज करना is a complex thing for our software developer. Thus, the Facade is also like a package for our own system, and we made a Facade class for it, and it contains all those public functions that we require for our application. So for requiring such methods from other packages, it doesn't access directly to the other packages, it only access that Facade class only that has these public functions from other classes, right? From other packages. Now, like in this example, there is a basic template of Facade which is connected with other packages, package classes, and this Facade is connected with our application classes, right? And the same way जैसे हमने airline की एक class बना दी है और वो जो है वो packages के different classes से connect कर रही है. So इससे ये होगा कि हमारी application जो है वो दूसरे packages से communicate करते हुए ना ही data violate होगा, ना insecurity आएगी, और ये हमारी जो Facade class है it contains the other public functions of packages, right? Thus, this Facade pattern is used when we require more public functions from different packages and we need to reuse these package sections uh, excessively. Now the conclusion of our lecture we have learned today is Singleton pattern, Facade pattern, adapter pattern, and delegation pattern. And a few of other patterns are also discussed in previous part. So this is this our chapter 6 is completed today. This is our reference material. You already know our book, Practical Software Development using UML and Java. It's second edition we are using in this. Okay, Allah Hafiz.